Hello, friends. So first of all, thank you for registering yourself for my webinar, Trading Index and Stock Options. तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वेबिनार को रजिस्टर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आप सभी के लिए और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एक चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे। So a few important things that you should know before attending this webinar. First, हम सभी क्रिकेट देखते हैं. We are cricket lovers, right? We are Indians. So we understand when India and our opponent team is playing, we always try to analyze. हम analyze करने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरा टीम है जो इंडिया के अगेंस्ट खेलने वाला है उसका बैटिंग ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, उसका बॉलिंग ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, उसका फील्डिंग ऑर्डर कितना स्ट्रांग है. तो इस तरह के कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू ऑलवेज कीप इन माइंड, इसका आप ध्यान रखते हो, राइट? और हमेशा आप जब अपने घर में उस क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे होंगे तो यू वुड बी थिंकिंग कि ओके, मान लीजिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच है तो द साउथ अफ्रीकन बैटिंग ऑर्डर टुडे इज वीक. Okay, so how can India win? Can India win by improving their bowling line or their batting line? Which becomes a question. जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. तो फ्रेंड्स, यही चीज हम स्टॉक मार्केट्स में भी करते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई. मैं हमेशा कहता हूं इक्विटी मार्केट्स का एक फंडामेंटल है, अनलेस somebody makes a loss, किसी का जब तक नुकसान नहीं होता तब तक मेरा फायदा नहीं होता. तो मुझे ये पकड़ना है कि किसका नुकसान होने वाला है. तो इस वेबिनार का जो आप फायदा सबसे ज्यादा उठा सकते हैं जिस वे में, वो ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई ओपोनेंट टीम जो है, क्या उसका बैटिंग ऑर्डर स्ट्रांग है या बैटिंग ऑर्डर वीक है या उसका बॉलिंग ऑर्डर वीक है. अगर उसका बैटिंग ऑर्डर वीक है, इफ द बैटिंग ऑर्डर इज वीक ऑफ योर ओपोनेंट, यू विल हैव you should have a stronger bowling order, क्योंकि आप उनके विकेट्स को गिरा सकते हो और आप उस मैच को जीत सकते हो. यू कैन विन दैट मैच वेरी इजीली. द सेम वे, अगर ओपोनेंट का बॉलिंग ऑर्डर इज वीक तो यू विल हैव योर बैटिंग ऑर्डर विच इज वेरी स्ट्रांग. So folks, this is what we have to learn during that webinar. So that is point number 1. Point number 2 is, आप लोग जानते हैं कि there are so many sports. मैं आज स्पोर्ट्स के उदाहरण ले रहा हूं इस वीडियो में. There are so many sports like say wrestling. Now wrestling is a sport which doesn't go on for 10 hours, 20 hours, 30 hours, right? It's a very small few minutes game. So when the wrestler is on the field, वो अखाड़े में है कुश्ती करने के लिए, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठा, मुंह धोया और सीधा कुश्ती करने के लिए चला गया. It doesn't happen like that, right? So what he is going to do is, वो क्या करेगा कि वो सुबह उठेगा, अपना वार्म अप करेगा. He will prepare, he'll do his pre-work. वो अपना pre-work करेगा so that he is able to put his best foot during the wrestling match, कि वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन दे सके अपने कुश्ती के अखाड़े में. तो फ्रेंड्स, हमें भी यही करना है. ये वेबिनार बहुत छोटा है, 2 घंटे का है, तो मेक इट और ब्रेक इट वाली सिचुएशन है. सो इस वजह से थोड़ा सा प्री वर्क करना हमारे लिए जरूरी है. तो फ्रेंड्स, इस वार्म अप को करने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज कि आपको यू आर गोइंग टू गेट 3 प्राइवेट वीडियो लिंक्स. ओके, और परेशान मत होइएगा अगर वो वीडियोस को देख करके आपको कुछ समझ में नहीं आता. द थिंग इज वार्म अप. वी आर नॉट गेटिंग इन टू द मैच. द मैच इज ऑन सम अदर डे व्हेन द वेबिनार इज गोइंग टू हैपन, राइट? सो आपको वार्म अप करना है. उस वार्म अप के लिए आई एम सेंडिंग यू नॉट टुगेदर. आई विल सेंड द फर्स्ट लिंक फर्स्ट, देन द सेकेंड वन, देन द थर्ड वन.
तो 1 2 3 के क्रम में वो आएगा आपके पास, एक एक करके वेबिनार से पहले। पहला लिंक जो होगा वो होगा डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस फंडामेंटल। जो दूसरा वीडियो आपके पास आएगा, जो लिंक आएगा, फेमिलराइजिंग विद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग। और जो तीसरा लिंक आपके पास आएगा वो होगा प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, ये 3 वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। अब आपको करना क्या है? आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग विद इन दैट वीडियो, because anyways I'm going to go through them during the webinar. But for a pre-work, okay, for warm up, I would advise कि आप इन वीडियोस को कम से कम 6 बारी, 7 बारी, 8 बारी, 10 बारी जरूर देख लें, because this will warm you up and will familiarize you with the important fundamentals of options trading, जो कि हम वेबिनार वाले दिन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यू विल बी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्री वर्क दैट यू वुड हैव ऑलरेडी डन। जो दूसरी चीज होगी, द सेकेंड थिंग वुड बी द थर्ड वीडियो विच आई विल सेंड यू, वेयर इट सेज प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। उस वीडियो में एक असाइनमेंट होगा। If you are able to do that assignment before the webinar, से पहले अगर आप उस assignment को कर लें, तो it will be very very helpful for you, because understanding that webinar will become really very easy for you, and you will be able to ask very very smart questions during the webinar. So friends, so this is just an introduction video I wanted to send you all, which I do in all my webinars, and it has been exclusively created for you. So जो वीडियो लिंक्स आपको आने वाले हैं इसके बाद, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए हैं. दैट इज नॉट फॉर माय पब्लिक व्यूइंग. सो फ्रेंड्स, ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एंड मैं आपसे मिलूंगा अपने वेबिनार के दिन पे. Hello friends, welcome to part 2 of trading index and stock options pre-work. तो आज हम सीखेंगे important reports. तो friends, a quick recap from the previous video. तो पिछली वीडियो में आपने समझा कि what are derivatives. Derivatives are nothing but contracts for hedging, और हमने कॉटन का उदाहरण लिया था in order to understand this point. The second thing was that derivatives are extremely risky to trade because they have high exposure, क्योंकि इसमें हमें lots में काम करना पड़ता है. So you cannot buy or sell maybe say 1 or 2 or 3 shares in the market. You will have to either buy or sell the full lot size of that specific stock or index. और तीसरी चीज हमने सीखी थी कि ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर टाइम बाउंड. सो दे आर ईदर टाइम बाउंड बेस्ड ऑन मंथ, लाइक 1 month, 2 months, 3 months, or they are weekly time bound, like in case of बैंक निफ्टी. सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि what all are the reports that we should be knowing. So there are 4 reports which will be used during the webinar. So the first report is equities BAV copy. This is a CSV format report which is a historical report. और ये सारी reports मैं अभी आपको दिखा दूंगा इंटरफेस पे. The second one is equities security wise delivery position. This is also इंटरफेस बेस्ड रिपोर्ट, और इसको हमें
.dat में डाउनलोड करना पड़ता है. The third one is equities security wise price volume archives. This is interface based and is used for quick verification. And the fourth one would be equity derivatives contract wise price volume archives. This is also interface based and will be used for quick verification. और फ्रेंड्स मैंने आई हैव पेस्टेड द URLs ऑफ दीज रिपोर्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर एंड मे यूज इट एज अ बुकमार्क. सो फ्रेंड्स अब हम इंटरफेस पे ये देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं और इनको कैसे एक्सेस करना है. All right, friends. So this is actually the snapshot of the NSE India's website. तो आप जब भी होम पेज पे रहेंगे तो you will find that there is a ribbon like this which has various options. तो friends सबसे पहली रिपोर्ट जो कि BAF copy है which is a historical report that can be found from if you go to the home page. Then go to products. Under products, you will click on equities. Then again under equities, you will click on historical data. And under historical data, you will click on archives of daily / monthly reports, which is this option over here. All right, friends. And once you do this, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा जो कि इस तरह से दिखेगा. और परेशान ना हो, मैंने इसका जो URL है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है. तो फ्रेंड्स इस इंटरफेस पे यू विल क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और यहां से ये जो BAV कॉपी रिपोर्ट है दिस विल हैव टू बी सिलेक्टेड एंड सिंस इट इज अ हिस्टोरिकल रिपोर्ट यू विल क्लिक हियर एंड से you will select a date in order to download this report. And once you do get data, the report will open in front of you in a CSV zip format. And in order to download this, you will click on this and you will see that the report will get downloaded over here. So from here you can open this and it will open in zip folder like this. If you double click on this file, this will open up the file in a comma separated version which is a CSV which basically opens on the Excel sheet. So it will open up like this. It's going to open up like this. So friends, the important columns in this would be for you symbol. So these are basically the scripts. So we will always stick to Nifty 50 scripts. So you will have to filter Nifty 50 scripts out of this report. Under series, if you put a filter, we will always be interested in only one series, which is equities. Rest of the series will not be used for our webinar. So we will use only equities. So if you will click on equities, these are only the equity related data that you see on your Excel sheet. So along with this, the open, high, low, close, last, previous close, total traded quantity, total value. So this is the turnover. This is the timestamp. Along with that, how many total number of trades have happened. And this is basically a ISIN number which is unique for a script. So this is the kind of report that you will get. So just in case if you want to have a report of 31st of March 2017, you can download that report like this from the interface. So you can select 2017,
go to 31st of March. So you can see 31st of March 2017, get data, and you will get the file right over here. All right, friends. The second report is also available on this interface itself. So you will click on this drop down, and from this drop down you will go to security wise delivery position. So you will click on this, do a get data, and this is going to open up a report like this. So friends, this is a .dat file. Now a .dat file is nothing but a kind of a database file. So what you have to do is, you will Control A, copy the entire file, do a right click, copy. Once you have done this, you will open a Excel sheet. Say this is the Excel sheet, a blank Excel sheet. You will come to the first column, do a right click and paste, and you will paste it as a text. Once you have done this, the entire thing will get pasted in one column. Now the next step would be to select this column by clicking on this column heading. Go to data on the top of the Excel workbook, and from here you will select an option which says text to columns. So you will click on this, it will say delimited, you will click next, you will only select comma because it is comma separated. So you will select comma, you will click on next. On this you don't have to do anything, click finish. You can see that the data got separated into columns automatically. So friends, what you have to do is that if you apply a filter like this, you first have to select and then apply a filter. Then over here 20 stands for the report type. This is nothing but a serial number. These are the scripts, these are the symbols. Over here these are the series. So what you have to do is, you will only use equity like this. Now over here it is actually telling you what was the total traded value. This column is telling you what was the delivery volume, means how much material, कितना माल मार्केट में किसी ने सप्लाई किया. All right, so this is the delivery volume, and this is nothing but the percentage of this delivery divided by the total quantity traded multiply by 100. You can see it here. This divide by this into 100. So this is exactly the value that you see here. So friends, this will be the second report. It tells you about what was the total amount of delivery of stocks which happened on that specific day. Now the third report. Now the third report is nothing but the interface report for quick verification. Now for that, under the same section on the left hand side, you will click on security wise price volume archives. So click on this,
and this opens up a interface like this. Over here you can write uh, the name of the script, select equities, EQ, and you can put a time frame if you want, or number of days, whichever you want to do, and say from second to third, do a get data, and it is telling you on the interface itself that on this particular date, what was the previous close, open price, high price, low price, last price, close price. This is the average price, average traded price, total traded quantity. So basically this is the volume, the turnover, number of trades, delivery quantity, and also delivery percentage. So friends, this interface will be used in order to do a quick lookup of price and a verification of the price and the delivery volume. Now the fourth report is a derivatives report. So for that you will go under products, then we will go under equity derivatives, then under historical data you will go to contract wise archives, and it will open up an interface like this. Now this is exclusively for derivatives, futures and options. So here you will choose either stock options or index options, because this training is all about options. So say you select index options, you will select the symbol. Now say it is Nifty 50, you will click and select the year, which is 2018. You will select the expiry of the contract that you are trying to look up. Now say right now it is April, so we select 26th of April 2018, and over here, is it a call or is it a put? Say it is a call, you will have to enter a strike price, like say, I'm sorry, like say 10,500, and either number of days, or you can select a period. Now say if you want to select a period, say second till third, get data, it will start showing you a interface report. Now within an interface report, you will see it will tell you the date, the expiry of the contract, the type of the contract, whether it is call or put, the strike price, the open, high, low, close, last traded price, settle price. Settle price is nothing but the close price. Number of contracts traded, what was the turnover, the premium turnover. Premium is basically nothing but a turnover in terms of the premium which was on the buy side. Open interest, don't worry about this. Change in open interest, again don't worry about this. Underlying value. Underlying value is basically the closing value of spot market. So basically, which is the equity market, cash segment. So this is the close price of the cash segment of whichever symbol you are trying to pull a report for. So friends, these are the 4 reports which will be used for our webinar. So kindly ensure that you do enough of fiddling with these 4 reports before I send you the third video, in which there will also be an assignment. So friends, what I have done is, मैंने क्या किया है, मैंने all these URLs, ये सारे URLs को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, so that you can just simply click on them and go right to the point where the reports are. So friends,
आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बट जस्ट इन केस आपको बहुत ज्यादा यू आर नॉट familiar with these reports, just go ahead and fiddle around with them, because in my next video I will actually be using these reports in order to show you that how do we prepare important data points for doing fundamental analysis, which is completely based on these four reports. All those data points are going to come from these four reports only. So friends, thanks a lot for watching this video, and I will meet you in my next video, which will be the third video before our webinar. So thanks folks. Bye bye. Hello friends. So welcome back to index and stock options trading pre-work, and today is part 3, preparing important data points for fundamental analysis. So friends, a quick recap. अभी तक हमने पढ़ लिया है in recap 1 फर्स्ट वीडियो में कि what are derivatives. हमने देखा derivatives are nothing but contracts for hedging, where we took the example of cotton as a commodity. Second was that derivatives are extremely risky to trade owing to high exposure. And the third thing that we learned is that derivatives are time bound. Now, in the second video, we learned about important reports and where are they located. So those four important reports were equity, BAF copy, equities, security-wise delivery position, equities, security-wise price volume archives, and equities, derivatives, contract-wise price volume archives. और मैंने आपको इन चारों के जो लिंक्स हैं वो पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए थे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों ने काफ़ी फिडलिंग कर ली होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी समय भी दिया था कि इन रिपोर्ट्स के साथ आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड volatility in detail, okay, because this entire webinar is going to be dependent on the concept of volatility. So let's consider I'll be using these candles to represent one day of price movement in a script or a commodity, or it can also be an index. Now let's consider that there was a green candle on day 1, and on day 2 something like this happened. So this is day 1 candle, this is day 2 candle. So this means that the volatility has increased. The same way, if you take this set of red candle, this is day 1, and the next day you probably find something like this. This also means that the volatility has increased. The only difference is in the price movement. Here the volatility has increased in the upward direction, so increasing price. Whereas here the volatility has again increased, but in the downward side of the price. So friends, now let's understand when we mix and match, because this is a very ideal situation. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ग्रीन 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 ही होता रहे, रेड 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 ही होता रहे, ऐसा कभी नहीं होने वाला. So it's gonna be seesaw, right? So let's consider an example that day 1 was a green candle, this one, and day 2, let's assume something like this happened. So we are talking about only these two candles right now, day 1 and day 2. Now you see that day 1 there was a green candle and day 2 there was a red candle. Now this is a classic example of reduction of volatility.
So friends, please remember, whenever you see same color candles happening, it is indication of increase in volatility. Whereas if you see different color candles happening, it is an indication of a reduction in volatility. So friends, now I am going to show you an example on this candlesticks, basis which we will be collecting our data points for doing fundamental analysis. Okay, now let's consider that something like this happens. There is a candle on day 1, and on day 2 a situation like this occurs. So something like this happens. So there was this candle. Okay, let's not be too worried about the color of the candle. So I'll just make it white so that, you know, we are not confused with the color right now. Okay, so let's assume something like this happened. Okay, so we see that this is day 1 and this is day 2, and in day 1 and day 2, something like this happened. So I'm considering the low point of the previous the day 1 candle and the high point of the day 2 candle. Do you see that there is a gap over here now? Okay, so this symbolizes, this tells us that the volatility, only this kind of a situation where you see this gap has been developed and not filled during the day, that the volatility has terribly increased. Okay, please remember, the volatility has terribly increased, terribly increased if there is a gap. Okay, the same way, it could be the other way around also, that let's assume that there was a candle like this, and don't worry about the color right now, I will just make them white so that we are not confused. Okay, now in between these two candles, so this is day 1 and this is day 2, we see that again there is a gap. Okay, so day 1 the price was here, day 2 the price has gone here, but it has created a gap over here. Okay, so this also symbolizes that the volatility has terribly increased. Okay, so this also means that the volatility has terribly increased. So whether the day 1 price is up and the day 2 price is down and there is a gap, तो इसका भी मतलब होता है volatility has increased. अगर आप देखें कि day 1 the price is below और day 2 पे price ऊपर है और बीच में एक गैप बन गया है, तो भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है. तो फ्रेंड, ये दो जो एग्जाम्पल्स हैं, ये दो फंडामेंटल्स हमें हमेशा याद रखने हैं. तो दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2. So friends, these are the patterns that we have to look for. Now let's move on to the third pattern, which is also important. Now for that I will just copy the same candles from here so that I don't have to draw it again. Okay, all right, so
don't need it, don't need it, don't need it, don't need it, don't need it. Okay, now इसका tail कहाँ गया? Alright, we left the tail over here. Okay. Alright. Now, let's consider another scenario. Now, this scenario is going to be something like this. Let's consider this is day 1 candle and this is day 2 candle. Don't worry about the colors of the candle. Okay. And say the situation is somewhat like this. Okay. Where we see that the day 1 high is somewhere here, okay, and day 2 low is somewhere here, and the next day, I'm sorry, the day 1 high is here and the day 1 low is here, and on day 2 you see that the complete candle is encapsulated in between day 1. तो डे 2 वाला जो कैंडल है वो पूरी तरह से डे 1 के कैंडल के अंदर है. तो फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन होती है ये होती है वॉलेटिलिटी रिड्यूस होने की इंडिकेशन. सो फ्रेंड्स, दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड सेटअप. सो नंबर 3. तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं. द फर्स्ट सेटअप इज where the day 1 price is up, the day 2 price is down, and there is a sustained gap in between the low of the first day and the high of the second day. So this is high volatility. तो ये high volatility होता है और ये हमारा पहला सेटअप होगा. दूसरा सेटअप होगा जहां पे कि पहले दिन का प्राइस नीचे है. So at the first day it is the price is below and the next day the price is up. दूसरे दिन का प्राइस ऊपर है और इन दोनों प्राइसेस के बीच में एक सस्टेन्ड गैप है यहां पे. तो ये दो सिचुएशंस जो हैं ये हाई वॉलेटिलिटी की हैं और ये जो तीसरा सेटअप हमने देखा ये सेटअप होगा लो वॉलेटिलिटी का. तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा याद रखना है कि हाई वॉलेटिलिटी, तो ये वाला जो पेज आप देख रहे हैं ये पेज है हाई volatility. Okay, so two setups for high volatility. Same way down. This one is a setup for low volatility. All right, friends. So these are the fundamentals and our entire webinar is going to be revolving around this. So setup number 1, high volatility. Setup number 2, again high volatility. Setup number 3, low volatility. तो फ्रेंड्स, ये जो volatility है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इन तीनों सेटअप्स को आपको ध्यान में रखना है फॉर आवर फंडामेंटल एनालिसिस. तो फ्रेंड्स, वेबिनार में जब आप आएंगे तो मैं इनमें कलर्स भर के आपको सिखाऊंगा कि आपको इन सेटअप्स को किस तरह से एनालाइज करना है. पर अभी आप बिना कलर के इन चीजों को फंडामेंटली समझ लीजिए कि ये 3 सेटअप्स की हमें जरूरत होती है. तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ये जो हाई वॉलेटिलिटी वाला जो सेटअप है, द वन विच इज हाई वॉलेटिलिटी is going to be indication for doing sell side options trading. All right, friends. The same way, this third setup is for
बाय साइड ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, तो ये फंडामेंटल चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाई सेटअप 1, सेटअप 2 सेल साइड के लिए है, और लो सेटअप 3 जो है वो बाई साइड के लिए है। वेबिनार में मैं समझाऊंगा इनमें कलर्स भर के कि कैसे सेटअप्स को टेक्निकली वेरीफाई किया जाता है, पर इस वीडियो के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। नाउ अब हम ये सीखेंगे कि हमें उस इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट को कलेक्ट कैसे करना है, हमें रिपोर्ट्स में से इन 3 सेटअप्स को किस तरह से निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि फ्रेंड्स, हम एक बहुत ही हाई रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कि हमें केवल लिक्विड स्टॉक्स और इंडाइसेस में ही ट्रेड करना है ऑप्शंस को। दूसरा, हमारा जो भी सिलेक्शन रहे फंडामेंटली या टेक्निकल एनालिसिस के बाद, वो जो सिलेक्शन रहे उसमें रिस्क प्रोफाइल शुड बी लो एंड द profit probability has to be high. So we will trade only setups which will have low risk profile and high profitability. ये सारी चीजें मैं वेबिनार्स में अपने वेबिनार में एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी चीज का जो आपको ध्यान रखना होगा वो होगा कि we will follow difficult entry method and easy exit method. So friends, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी ट्रेड में घुसने के लिए हम जो मेथड का इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा करेंगे कि हमारी एंट्री बहुत ही मुश्किल से हो, और जो एग्जिट का मेथड हमारा होगा कि हमारी एग्जिट बहुत आसानी से हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इन तीनों में से अगर आपने किसी में भी गड़बड़ कर दी, गलती कर दी, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग ट्रेड नहीं रहेगा। तो पहली चीज, लिक्विड स्टॉक्स और इंडाइसेस में सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी है, तो डोंट ट्रेड इन CNX IT बिकॉज इट डजंट हैव लिक्विडिटी। सो it has to be Nifty, Bank Nifty, or liquid stocks which are Nifty 50 stocks। उसके बाहर अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये जो सेकंड पॉइंट होता है कि रिस्क लो, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हाई सफर करने लगता है। इस वजह से आप अगर निफ्टी 50 के बाहर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके कुछ टेक्निकल चेक पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं वेबिनार में आप लोगों को बताऊंगा। द सेम वे द थर्ड थिंग इज कि हमें अपनी एंट्री को ट्रेड में बहुत डिफिकल्ट रखना है, बहुत ही डिफिकल्ट, कि बहुत ही मुश्किल से एंट्री मिले हमें। उससे होगा ये कि हमारा जो एग्जिट होगा वो बहुत आसान होगा। तो जिसका मतलब होता है कि अगर हमें बाई करना है तो ऐसा नहीं है कि जो भी प्राइस चल रहा है उसको बाई कर दिया। हमको ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करना है जहां पे कि बायर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब होता है कि हमारी एंट्री बहुत मुश्किल से होगी वहां पे, क्योंकि बायर्स सबसे ज्यादा होंगे। द सेम वे अगर हमें सेलिंग करनी है तो हम ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे कि सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब हमारा ट्रेड में घुसना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इससे फायदा फ्रेंड्स ये होता है कि एक तो स्टॉप लॉस का मीनिंग रहता है कि हाँ, अगर आप 0.5% का स्टॉप लॉस ले रहे हो या 50% ऑन योर कैपिटल का ट्रेडिंग कैपिटल का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो वो मीनिंगफुल होता है। अदरवाइज इन स्टॉप लॉसेस का कोई मीनिंग नहीं है अगर आप अपनी एंट्रीज को डिफिकल्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि उल्टे सिनेरियोज में ज्यादातर लोग काम करेंगे जहां पे कि वो अपना एंट्री इजी मेथड रखेंगे और जो एग्जिट है उसको डिफिकल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें वो नहीं करना है।
तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमें डेटा पॉइंट को कैसे इकट्ठा करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें एनएससी की वेबसाइट पे आ जाना है और एनएससी की वेबसाइट से आपको इस रिबन पे प्रोडक्ट्स पे जाकर के इंडाइसेस पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे अबाउट इंडाइसेस है, इस पे आपको क्लिक करना है और निफ्टी 50 इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे। जब आप ऐसा कर लेंगे तो यहां पे एक फैक्ट शीट दिखेगी आपको। आपको इस फैक्ट शीट पे क्लिक करना है और ये फैक्ट शीट कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस फैक्ट शीट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये वाला टेबल। ये वाला टेबल, तो फ्रेंड्स इसमें आपको हमेशा 10 स्टॉक दिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So you will be able to see a list of 10 stocks over here. Okay, and for me these 10 stocks are the most important stocks within Nifty 50. Why? Because ये जो हैं stocks ये weightages के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, these would be the lowest risk profile stocks for us because they will have the highest of the uh, 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 liquidity. So friends, मैं एग्जाम्पल अभी डेटा पॉइंट कलेक्शन, हालांकि हम तो काम निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में करने वाले हैं, पर एज पार्ट ऑफ माय ट्रेनिंग ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये अपडेट होती रहती है। आप अगर 3 साल पहले का ये पेज देखेंगे तो उसमें ये स्टॉक्स कुछ और थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आज की डेट में नंबर 1 पे है और रिलायंस नंबर 2 पे है। अगर आप 7-8 महीने पहले का अगर ये देखते तो आपको टीसीएस, ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ये यहाँ पे नंबर 1 पे दिखता। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनकी जो रैंकिंग है, इनकी जो वेटेजेस हैं, ये रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं और ये आपको उस कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है। तो फ्रेंड्स, मैं उदाहरण केवल एचडीएफसी बैंक का या रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही ले लूंगा आज के वीडियो के लिए, और बाकी का जो चीजें हैं वो आपको करनी है रिमेनिंग निफ्टी 50 स्टॉक्स पे एज एन असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स, हमें ये समझ में आ गया है यहां इस लिस्ट से देख करके कि लेट्स सी कि सबसे पहले देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इस इंटरफेस पे आ जाना है। ये सिक्योरिटी वाइज आर्काइव्स का इंटरफेस है और आप लोग को पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि इस रिपोर्ट से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक लिखते हैं, यहाँ पे EQ सिलेक्ट करते हैं और हम ये देखते हैं कि मार्च की 1 तारीख से मान लीजिए कि मार्च के 23 तारीख तक का गेट डेटा करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब हमें इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है जिससे कि हम इसमें से अपना एनालिसिस कर सकें, और फिर इस फाइल को क्लिक करके हमें इसके खुल जाने का बस इंतजार करना है। तो फ्रेंड्स, फाइल हमारे सामने अब खुल चुकी है। अब हमको क्या करना है इसके अंदर कि हमें अभी फिलहाल मतलब है केवल हाई, लो, ओपन और क्लोज प्राइस से। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे का जो डेटा है इस एनालिसिस के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। तो हम केवल आई कॉलम तक ही डेटा को रख रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई हाई वॉलेटिलिटी सिचुएशन बनी थी। उसके बाद हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई लो वॉलेटिलिटी सिचुएशन बनी थी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना है, हाई वॉलेटिलिटी का मतलब है इक्वल टू दिस डेज हाई प्राइस, ब्रैकेट लगा लेते हैं कि दिस डेज हाई प्राइस इज लेस देन
द लो प्राइस ऑफ प्रीवियस डे, मतलब डे 1 प्लस, और this day's, the day number 2's low price is greater than the high price of previous day. Enter. तो ये 0 बता रहा है, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। यहां पे देखिए एक हाई वॉलेटिलिटी डे बना है, ये वाला। ओके, इसी तरह से लो वॉलेटिलिटी निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू कि टुडेज हाई, मतलब डे 2's हाई इज लेस देन डे 1, मतलब प्रीवियस डेज हाई, multiply, and today's means day 2's low price is greater than day 1's low price, जिसका मतलब कि डे 1 की कैंडल के अंदर है डे 2 का कैंडल। एंटर। देखिए एक भी लो वॉलेटाइल डे हमें नहीं दिख रहा है जो कि हमारे सेटअप को मैच करे। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा कि ये एक डेटा पॉइंट है जो हमारे काम का है, विच इज अ हाई वॉलेटाइल सेटअप। तो एक बार क्विकली नजर मार लेते हैं रिपोर्ट पे। तो ये 23 तारीख तक का डेटा हमने निकाला था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अभी। अब आप देखिए 23 मार्च का वो डेटा था जिस दिन वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, जिसका मतलब था कि ये जो डे 2 का जो हाई प्राइस था वो डे 1 के, मतलब 22 तारीख के लो से नीचे था। मतलब एक हाई वॉलेटिलिटी डे क्रिएट हुआ था, एक हाई वॉलेटाइल सेटअप तैयार हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइस ऊपर चला गया। अगर आप देखें सी, तो फ्रेंड्स इस सेटअप को रीड करने का जो तरीका है वो मैं वेबिनार में समझाने वाला हूं, पर फिलहाल आपको ये करना है एज एन असाइनमेंट कि आप जितने ज्यादा निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ये काम कर सको, आपको कुछ इस एक्सेल शीट की तरह काम करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा स्टॉक था और वो कौन सा दिन था जिसमें कि एक या तो हाई वॉलेटाइल सेटअप बना था या फिर एक लो वॉलेटाइल सेटअप बना था। अगर लो वॉलेटाइल सेटअप बनेगा तो ये जो कॉलम है यहां पे 1 दिखेगा आपको, जैसे कि यहां पे आपको 1 दिखा। तो फ्रेंड्स हमें इस तरह का सेटअप ढूंढना है बस। तो इस वीडियो में जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आप जितने ज्यादा हो सके निफ्टी 50 के डेटा को स्टडी कीजिएगा हिस्टोरिकली, और इस तरह के डेटा पॉइंट को निकाल के उनको लिख लीजिएगा अपने पास, जिससे कि हम जब वेबिनार के दिन पे डिस्कशन करें तो आप देखेंगे कि मैं जिस डेटा पॉइंट को उठाने वाला हूं वो आपकी नोटबुक में शायद ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। तो दैट विल ऑल्सो बिकम अ वेरिफिकेशन। प्लस इस काम को करने से ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप रियली इस काम को करने की कोशिश करोगे वेबिनार के बाद तो आपको आसानी होगी, और इसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो वो क्वेश्चन आप मुझसे वेबिनार के दिन पे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं यहीं पे कंक्लूड कर दूंगा, और प्लीज इस असाइनमेंट को आप करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं अब आपसे मिलूंगा वेबिनार के दिन पे, और आपको वेबिनार के लिए जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो शॉर्टली भेज दी जाएंगी। थैंक यू।